कहाँ पर जाना है, इंग्लिश फिल्मों या हिंदी फिल्मों में? नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश फिल्में बहुत पसंद है, पर हिंदी फिल्में भी पहला प्यार है जिसे बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं प्रीमियर पे ही फिल्म देखें, वैसे भी ऑडियंस में इस तरह के आजकल थिएटर्स हैं कि हम लोग आराम से जा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। तो ज़रूर हर पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। हिंदी फिल्मों में तो अक्सर आपके सेट के लोग मिल जाते हैं, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, यहाँ पर उनकी कमी महसूस नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मूवी देखने के लिए आ रहे हैं, किसी से सोशलाइज करने के लिए नहीं आ रहे हैं। Lastly, which Bollywood actor you think can give a run for the money to the Hollywood actors? Only one. Why? I think most of our actors today it's not really, I would say, looking at the way of the international film. We have, people like Antonio Banderas, who's not, say, the typical American, or a Jackie Chan, who's not at all American. So I think our heroes are very well equipped too. And even within the heroines, we've all going crazy about Shakira here, or Penelope Cruz, or even Salma. So there are a lot of heroines who are not of the typical blonde image, and I think they're doing great. So all our beauties from here and all our macho women should do great there if they're given a chance, and if they have the inclination towards it. Because English is a language which we speak better than a lot of the other guys do, so shouldn't be a problem. One last question. आजकल हम देख रहे हैं Minor plots which may be very interesting, but because you have to follow the main story, sometimes have to give up really nice, interesting plots. That's what I find the difficult part. Thank you. Excuse me. Hello. हम इधर ही रहते हैं आजकल.